Hi students, a very good morning to all of you. Now today we are going to start new chapter of chapter physics, that is chapter sound. Okay, clear? So first we know that what is sound. You know that what is sound? Sound is a form of energy. Sound is a form of energy which enable us to what? Which or we can say that which creates sensation in our ears, which creates sensation in our ears. Clear? Means sound, it is a form of energy and which creates sensation in our ears. Okay, now but first thing arise here, how sound produces, means first option, first thing is what? Sound is produced by the vibration. When anything vibrate, then there is a sound, then there the sound is produced. Clear? Means anything is vibrate. When anything is vibrate, then we can say that sound is produced. Clear? Now suppose if we take this tongue. This is tongue, is known as tongue. Okay. When this tongues vibrate, when you strike this tongues, then this tongues will vibrate like this. Okay. And during vibration, they create a sound. Okay. You know that bell. When you hit the bell, what happened? When you hit the bell with any metal body, then what happened? The that body which is hit by the metal body, they start vibrate, and during vibration they produce sound. Clear? Okay. Now first thing is how sound is produces, means sound is produced by the what? By the main cause of the sound is produced, sound producing is what? Vibration. When anywhere there is vibration, then there is a sound. Okay. Now next example, if you take a string, आप एक string ले लीजिए and you can stress that string very hardly. Okay, and then anyone can pull that string and place okay, आप उस string को लेके खींचिए और छोड़ दीजिए. जब आप खींच के छोड़ेंगे तो what happen? जैसे ही छोड़ेंगे वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा, और जब वाइब्रेट करेगा then there is a what? Producing sound. Clear? स्ट्रिंग की प्लेस पे आप रबर बैंड ले सकते हैं. यू कैन टेक अ रबर बैंड एंड सेम प्रोसेस वी हैव टू डू, देन देयर इज अ साउंड इज प्रोड्यूसेस. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज, means we can say that all vibrating body produces sound. Okay, all vibrating body produces sound. Clear? Now next thing is sound produced by human, sound produced by humans. Clear? How sound produced by humans? We know that sound is produced by every human. Then how? What the thing which can produce the sound in humans? Clear? The first thing, you know that in humans the sound is produced by the voice box. In humans there is a voice box, or we can say that is a larynx. Okay, that larynx vibrate and it produces sound. Clear? Means in human body what? There is a voice box. Or we can say that this is larynx. Okay, that is larynx. Clear? That is present here. Okay, here when you say anything, then and you place your finger here, then you see that during speaking anything there is a vibration. At this place there is a vibration. You can do yourself also. Okay, if you you speak and during speaking you can place your finger here. Okay, then you
feel that there is a vibration. Clear? Means there is a larynx, or we can say that there is a voice box. What happened? The voice box is the upper end of the windpipe. Windpipe यहाँ पे है, windpipe के just upper end पे voice box present है. Clear? The two vocal cords are straight across the voice box in such a way that it leaves a narrow slit between them. Air passes through this slit. Means slit दो ऐसा वो प्रेजेंट है कि बीच में स्लिट बन रहा है, एक स्पेस है, और जैसे ही वहां से हम एयर पास करता है तो वो एयर पास करते ही वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करता है. जैसे ही वो वाइब्रेट करता है तो साउंड प्रोड्यूस होता है. क्लियर? It leaves a narrow slit between them and air passes through the slit. Okay? When air from the lungs is forced out through the slit, the vocal cord vibrate to produce sound. Vocal cord vibrate to produce sound. The quality of sound is different when the vocal cord is stretched or relaxed. Quality of sound जो होती है वो different होती है when the vocal cords are stretched or relaxed. Stretching पे कुछ और किसी और टाइप का साउंड प्रोड्यूस होगा और रिलैक्सिंग पे कोई और साउंड प्रोड्यूस होगा. ठीक है? मींस साउंड सेम रहेगा, साउंड की क्वालिटी डिफरेंट हो जाएगी. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज sound needs a medium to propagate. We know that sounds need a medium to propagate. Means sound को travel करना है. Propagate means travel करना. Sound को travel करना है तो travel करने के लिए उसे medium चाहिए. Okay? Medium means साधन. Suppose that आप स्कूल से घर से स्कूल जाते हैं, then there is a medium. चाहे आप by the help of your bicycle or simply you can use the bus. These are the mediums. By this medium you can travel or to complete the distance between school and home. Clear? Means sounds needs medium to propagate. Second thing is sounds need medium to propagate. Clear? Sounds needs medium to propagate. Means without medium the sound never be propagate. Without medium sound never be propagate. Clear? Okay. What is the medium? Simply there is some activity given in your book. First activity done by with the help of the iron rod or metallic rod. आप एक मेटल रॉड ले लीजिए. मेटल रॉड की एक तरफ से आप साउंड प्रोड्यूस करिए, दूसरी तरफ एनीवन कैन रिकॉग्नाइज दैट साउंड. क्लियर? सिंपल एग्जांपल, जो ट्रेन की पटरियां होती हैं, ट्रेन की पटरियां, रेलवे लाइन पे अगर काफी दूर ट्रेन है तो कैसे पता करें कि ट्रेन आ रही है? तो काफी दूर है, आपको ट्रेन दिख नहीं रही है, फिर भी अगर आप रेलवे लाइन के उस रेलवे लाइन के जो मेटल्स है उस मेटल्स पे लाइन पे अगर आप अपना ईयर प्लेस करेंगे, बहुत पास ले आके सुनेंगे तो आपको वाइब्रेशन की साउंड आएगी. बिकॉज वो वाइब्रेशन काफी दूर ट्रेन की वजह से हो रहा है, बट वो वहां तक ट्रेवल कर रहा है. क्लियर? मीन्स जितने भी मेटल्स बॉडी होते हैं, मेटल बॉडी मीन्स some exception case like a sodium or potassium, but mainly metal body can propagate sound. Means metal body is a medium. It is a type of medium which propagate the sound. Clear? Okay. Now second is air. First medium is metal body. Second is air. Means air is also medium. बिना एयर के जो साउंड आप बोलते हैं वो साउंड ट्रांसफर नहीं होगा. बिकॉज एयर में पार्टिकल्स होते हैं, एयर है पार्टिकल्स, एंड दैट पार्टिकल्स कैन propagate that the sound energy in different directions. Clear? Means एयर में जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स साउंड एनर्जी को क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं. ठीक है? एक से दूसरे को, और जिस तरीके से साउंड ट्रैवल करता है. क्लियर? अगर एयर ना हो तो साउंड ट्रैवल नहीं करेगा. सिंपल एग्जांपल, आप एक जार लीजिए. जार
ग्लास जार, और उस जार में एक होल करके और उसमें कॉर्क लगा के एकदम टाइटली पैक कर दिया और उसके एयर को सक्शन एयर से सक्शन ट्यूब से उसे उसके जार के अंदर के एयर को बाहर ले लीजिए और जार में कोई एयर ना मीन्स दैट इज अ वैक्यूम। तो कोई एयर नहीं तो उसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज अ वैक्यूम। वो वैक्यूम हो गया। उस वैक्यूम में आप एक बेल ले लीजिए, बेल विच प्रोड्यूसेस साउंड, और उसको वायर स्ट्रैंड करके बाहर से बैटरी स्ट्रैंड कर दीजिए और बाहर स्विच रख लीजिए और उसको टाइटली पैक कर दीजिए, कहीं से उसमें एयर जाएगा। आप देखेंगे जैसे ही बेल बजाएंगे, बेल ऑन करेंगे, बेल रिंग करेगा, बेल इज रिंगिंग बट यू हैव नॉट हियरिंग एनी साउंड, आपको कोई साउंड नहीं सुनाई देगी। क्लियर? बिकॉज बेल रिंग कर रही है बट साउंड इज प्रोड्यूस्ड बट यू कांट हियर बिकॉज देयर इज अ वैक्यूम। वैक्यूम होने से साउंड प्रोड्यूस तो हो रहा है लेकिन ट्रैवल नहीं कर रहा है, और ट्रैवल नहीं करेगा मीन्स आपके कान तक पहुंचेगा नहीं तो आपको सुनाई भी नहीं देगा। क्लियर? मीन्स इन वैक्यूम sound never propagates. Clear? Means first is metal body, second is air, and there is also different types of medium, that is the water, and different types of medium. In different medium the speed of sound is different. Clear? Clear? Okay, now discuss next topic. That is, we hear sound through ears. We know that we have ears. हमें भगवान ने ears दिए हैं for what? For hearing the sound. Sound को सुनने के लिए। तो ऐसी क्या चीजें हैं जो sound ईयर साउंड को रिकॉग्नाइज करता है, सुनता है? कैसे सुनता है? You can see here. Simply, we have know that some things which are mainly very important in our ears. उसको हम देखेंगे और आप ईयर्स में क्या क्या होते हैं जो मेनली साउंड को रिकॉग्नाइज करते हैं और जिसकी वजह से साउंड सुनाई देता है, आप उन्हें देखिए हम। ठीक है? क्लियर? जैसे साउंड का आउटर कवरिंग है, ओके, ये साउंड का आउटर कवरिंग, ओके। आप यहाँ देखिए होल होता है, ठीक है, ये होल आगे जाके डिफरेंट डिफरेंट चीज में डिवाइड हो गया है। क्लियर? यानी ये हो गया आउटर ईयर, ओके, यहाँ साउंड वेव्स प्रोड्यूस हो रहा है और जा रहा है। क्लियर? साउंड वेव्स। क्लियर? That is the middle ear. This part is the middle ear. Middle ear. And after that there is a something, okay, only you have to understand, the diagram is not so good, so ओके। मेनली देखिए डिफरेंट हमें क्या समझना है, हमें ये समझना दैट इज मिडिल ईयर एंड दैट द पार्ट इज इनर ईयर, ओके। आउटर, मिडिल एंड इनर ईयर, दैट इज इनर ईयर। क्लियर? मींस थ्री पार्ट्स में डिवाइड है, आउटर, मिडिल एंड इनर। मेनली हमें क्या पढ़ना है, जैसे साउंड आउटर ईयर ने क्या किया, कवर किया। क्लियर? तो फर्स्ट पार्ट यहां पे आता है इस पोर्शन पे, ओके, नॉट हियर, एट दिस पोर्शन, दैट इज ईयर ड्रम, दैट इज ईयर ड्रम। ईयर ड्रम होता है ईयर मेम्ब्रेन, एक सॉरी थिन मेम्ब्रेन होती है जिसे हम ईयर ड्रम कहते हैं। क्लियर? When sound reaches this eardrum, then what happen? Eardrum is a thin membrane.
then what? It stretched, okay, and relaxed due to the pressure of sound waves. Sound waves का pressure डालता है तो ये relax first stretch होती है फिर relax होती है. Just इनके पीछे what? There is a behind this eardrum there is a three bones are there, and three bones are set up in systematic way. In systematic way में सेटअप होती है कि एक इस वाइब्रेशन के वजह से एक बोन वाइब्रेट करता है, एक बोन स्ट्राइक करता है, जिसके वो सेकंड बोन से स्ट्राइक करता है, थर्ड बोन से फिर सेकंड वाला स्ट्राइक करता है, जिसके वजह से वो तीनों क्या करते हैं? बीटिंग का काम करते हैं. They can beat on this drum, and the frequency of that or the intensity of the sound get increased. उस साउंड की इंटेंसिटी को क्या करते हैं? वो बढ़ाते हैं. See how? First, there is a three bones, and the three bones you have to know that first is anvil, second is stirrup. You have to know that three bones: anvil, stirrup, and hammer. Clear? These three bones are here, and they are arranged or attached in systematic way. Okay. Now after that, the sound reaches. Sound intensity reaches here this part, and that part is known as cochlea. That part is known as cochlea. Okay, there is a liquid in this, inside this cochlea there is a liquid. Okay, and after that there is a auditory nerve. Okay. Now after that, this cochlea can convert that sound intensity in the what? Electrical signals, and that electrical signals is transferred by the auditory nerve to the brain. Clear? Clear? And there is semicircular canals, but there is not so important part of the ear. The main important part of the ear is anvil, stirrup, and hammer. These three bones, eardrum, and this cochlea. Okay. Now ये तो out portion हो गया. What is the part of the ears? Function of the ear. लेकिन actual functions कैसे कर रहा है? Clear? Simply, the sound waves are outside and collected by the outer ear. The sound waves outer ear collect कर रहा है and reaches the eardrum. Okay, it starts vibrating, and this drum starts vibrating. These vibrations are passed to the oval window, okay, made by three bones. ये pass हुआ किसको? Three bones को, and that is three bones is anvil, stirrup, and hammer. Clear? Which acts as lever with pivot. They magnify the force of vibration. जो वाइब्रेशन यहाँ हुआ था उस वाइब्रेशन को वो मैग्नीफाई कर रहा है, उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा रहा है. Clear? The oval window has smaller area than the eardrum, so this increased pressure on the oval window and on the liquid in the cochlea. Okay? Means ये बहुत ही नैरो पाथ होता है, जिसके वजह से वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होता है, तो प्रेशर लगाता है और इस प्रेशर से साउंड वेव्स कहाँ मूव कर जाता है? In this cochlea. Clear? Clear? Now the vibration of liquid in this cochlea, there is a liquid. I told you there is a liquid in this cochlea. There is a liquid. The vibration of the liquid in the cochlea affect thousands of auditory nerves which send message to the brain. Means this the function of this main cochlea is what they convert that intensity of sound in the electrical signals, and there is a thousands of auditory nerves are there, and that thousands of auditory nerves can receives the sound waves in the form of electrical signals, and they can send to the brain. Clear? And we have to know that what the sound, which type of sound is produced, and what the thing which anyone can say that. Clear? This is the function of stirrup. Our ears are very delicate and fragile organs. You know that our ears are very delicate and fragile organs. Proper care must be taken to keep them in healthy state. Means इनका proper care हमें रखना होगा. Clear? Okay. Now
First you see it. Okay. Now after that, okay, some suggestion to keep the ear healthy and improve. Means some suggestions are given which keep the our ear healthy. Clear? Never insert any pointed object into the ear. Means कभी भी कोई भी pointed object ear में insert नहीं करना चाहिए. Clear? It can damage the eardrum. क्या वो डैमेज करेगा? फर्स्ट eardrum. और जब eardrum फट जाएगा तो आपको बहुत जब धीमे बोला जाएगा या साउंड सिंपली साउंड प्रोड्यूस होगी तो आपको सुनाई नहीं देगी. आपको बहुत चिल्लाना पड़ेगा उनको सुनाई सुनाई देने के लिए. बिकॉज इंटेस्टिन ईयर ड्रम ही वाइब्रेट करके इंटेस्टिन को बढ़ाता है. और अगर वो नहीं रहेगा तो ईयर वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस ज़्यादा नहीं होगा और आपको सुनाई नहीं देगा क्लियरली. क्लियर? एंड द पर्सन मेक डीफ और पर्सन डीफ हो जाएगा. नेवर शाउट लाउडली विद समवन ईयर. कभी भी साउंड किसी के कानों के पास जाके बहुत तेज से नहीं सुनाना चाहिए. इससे क्या होता है? ईयर ड्रम डैमेज हो सकता है. क्लियर? नेवर हिट एनीवन हार्ड ऑन हिज ईयर हिज और हर ईयर. क्लियर? मीन्स किसी के पास जाके उसके ईयर ड्रम के पास कान के पास सिंपली आपको नहीं हिट करना चाहिए. क्लियर? इससे उन सिंपली फर्स्ट क्या होगा? फर्स्टली ईयर ड्रम डैमेज हो जाएगा. क्लियर? क्लियर? ओके. Now class, we will discuss next topic in next class and you have to revise that all the topics which are discussed today. Clear? Okay, thank you to everyone.